डार्क सर्कल्स को कैसे कवर करें, कलर करेक्टर यूज करें कि डार्कर कंसीलर यूज करें, कौन सी मेथड को अपनाएं कि डार्क सर्कल्स चले जाए, एंड ऑल्सो विच वन टू यूज अकॉर्डिंग टू द डार्क सर्कल्स, बिकॉज कई बार आपने सारे स्टेप्स फॉलो करे होते हैं पर आपके डार्क सर्कल्स कवर नहीं होते. सो आज मैं आपको डिफरेंट मेथड भी बताऊंगी एंड डिफरेंट टाइप के कलर करेक्टर्स अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप्स एंड कंसीलर दैट वर्क्स फॉर यू और आपकी अंडर आइज ग्रे ना दिखे. दैट इज माई मिशन फॉर दिस वीडियो. सो कम ऑन, लेट्स गो एंड गेट स्टार्टेड. हेलो जी, माय नेम इज रिया. वेलकम बैक टू माय चैनल. अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, मेक श्योर करो कि आप ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए, सो एवरी सिंगल वीक यू लर्न समथिंग न्यू. आज तो हम सारे डार्क सर्कल्स की बैंड बजाने वाले. ओके, सो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ स्टेप 1 is prepping your under eyes. The way you prep your face, you need to prep your under eyes. Okay, so now you want to use eye serum or eye cream. That depends on your skin type. So if you have dry skin, you're going to use eye cream. If your skin is combination to oily, you're going to use eye serum. Why eye serum? Because this is not as thick, so it's not going to move around your concealer. यहीं पे गलतियाँ बहुत हो जाती है कि जिनकी स्किन कॉम्बिनेशन या ऑयली होती है, they sometimes use very thick cream and their concealer don't stay, crease a lot or move around a lot. So try to opt for eye serum. I prefer eye serum all the time. If you're using a retinol, आपकी अंडर आइज बहुत ड्राई हो गई है, तब जाकर आप आई क्रीम इस्तेमाल करो, then it's fine. But I would highly recommend eye serum. So पहले मैं इसको अच्छे से अंडर आइज पे लगाऊंगी एंड दिस वन हैज अ कूलिंग टिप. तो आई पैचेस भी बड़े अच्छे होते हैं टू प्रेप द अंडर आइज बिकॉज इट टेक्स अवे द पफीनेस. सारी लाइंस वगैरह थोड़ी सी कम हो जाती है बिकॉज कई बार क्या होता है, बहुत पफी लगती है ना आइज. जैसे लाइक मैं आपको पिक्चर बताऊंगी ऐसे. सो अगर आपकी आइज ऐसी है देन यूज अ कूलिंग टिप, या तो फिर वो आई मास्क आते हैं वो लगाओ जिसकी वजह से थोड़े से डीप अप हो जाए आइज. दिस आई सीरम इज फ्रॉम L'Oreal. It has caffeine and hyaluronic acid and this is how the cooling tip looks. Now you have to wait until it's absorbed completely. डार्क सर्कल्स को कवर अप करने के लिए आप कलर करेक्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हो एंड अ कंसीलर that is darker than your skin tone. आप दो तरीका अपना सकते हो. Now which one is good for you? I'm going to tell you that. Now these are the 3 different shades of color corrector. एक हो गया peach. Now peach one works really well for light to medium skin tone. Even it will work on medium skin tone. That's why I said light to medium. ये हो गया अगर आपकी डार्क सर्कल्स थोड़ी सी ज़्यादा डार्क है एंड आपकी स्किन भी थोड़ी सी ज़्यादा टैन है, then you would use the orange one. This one is in shade Rise. Okay, lip tinted के color corrector self setting है, so it comes in a stick form. You can use it in multiple different ways, but ये specially बने थे color corrector के लिए, but you can use it even as a lipstick. That's what they're meant for. Now ये shade को बोलते हैं Origin and this one is more red tone. Now this one would work great अगर आपकी skin tan से भी dusky, like थोड़ी सी darker skin tone है. ये सारे color corrector आपके लिए कुछ नहीं करेंगे. You will have to go in with the red one. Now dark circles का undertone होता है blue. And to cancel out blue, you'll have to use orange. On the color wheel, you'll see. That's why we use orange color corrector to cancel out the dark circle. Now, अगर आपकी skin dry है, then you're gonna use Huda Beauty color corrector, and she has wide range of color correctors too, so you can pick according to your skin tone. Now, I'm gonna use the lip tinted one in shade Rise. I'm using the traditional orange color corrector, and you'll see यहाँ पे मुझे ज़्यादा pigmentation है, तो मैं पहले यहाँ पे भी इस्तेमाल करूंगी. ना यहीं पे लोग गलती कर देते हैं कि बहुत ज़्यादा कलर करेक्टर लगाते हैं, यहाँ तक पूरा कलर करेक्टर लगा देगी, पूरे फेस भर देगी. प्लीज़ डोंट डू दैट बिकॉज वो क्या करेगा, फाउंडेशन के साथ मिक्स होकर इट्स जस्ट गोना लुक ऑरेंज. मैं अपनी फिंगर से ही उसको स्मूथ आउट कर रही हूँ. इस तरफ मैं डार्कर कंसीलर यूज कर रही हूँ एंड आई वांट यू गाइस टू सी 2 डिफरेंट मेथड्स एंड सी व्हिच वन वुड वर्क बेस्ट फॉर यू. और मैं उसको अच्छे से ब्रश के साथ ही ब्लेंड कर दूंगी. नाउ व्हिच एवर मेथड यू पिक, you have to make sure you do it before foundation. Foundation के बाद नहीं, foundation के पहले आएगा. Okay, and अगर आपकी skin oily है then what you can do is just take a little bit of powder and then just set the color corrector कि वो फाउंडेशन या कंसीलर के साथ मिक्स ना हो जाए एंड ऑरेंज इफेक्ट ना दे. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर फाउंडेशन एंड आई एम यूजिंग माय टियर कुशन फाउंडेशन एंड इसको सिर्फ ऐसे ही टैप करते करते मैं इस्तेमाल करूंगी. आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि फाउंडेशन अंडर आइज पे ना जाए, इसीलिए आपकी अंडर आइज क्रीज होती होगी बिकॉज यू डोंट नॉट वांट कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लेयर करे. सिर्फ कलर करेक्टर एंड कंसीलर आएगा, फाउंडेशन बीच में नहीं आएगा. अगर आपने फाउंडेशन लगाते हो इसलिए शायद आपको अंडर आइज क्रीज कर रहा होगा. सो अवॉइड डूइंग दैट. ऑफ टॉपिक, आई रियली लव दिस फाउंडेशन एंड आई डोंट नो हाउ टू स्टॉप माई सेल्फ टू यूज इट. मैं इसी को इस्तेमाल करे जा रही हूँ. आई रियली लव इट. एंड द शेड जो मैं इस्तेमाल करती हूँ इस 33N. आप इसे लाइटर भी ले सकते हो, ये थोड़ा सा टैन है मेरे लिए. But I really love it. I'm gonna like put it down in the description if you want it. Try it because I freaking love it. It is full coverage but still looks like skin. So I really love this foundation. अगर आपको दिक्कत होती है कि आपको फाउंडेशन बड़ा केकी लगता है, then try this one. You will really like it. Before I apply concealer, I always like to contour. So I'm just gonna go ahead and quickly do that before we go in with the concealer. Otherwise का contour stick use कर रही हूँ in shade Courage. ये इतना अच्छे से blend हो जाता है. Now these are my 2 top favorite concealers. एक ये बहुत full coverage है, पर अगर आप थोड़े से भी age में ज़्यादा हो और अगर आपकी lines ज़्यादा है, I would call them happy lines. If you have that more, then you have to opt for something that is hydrating. So ये Huda Beauty का concealer works for all ages. I wouldn't say that, but it's more hydrating. So ये dry
ड्राई स्किन के लिए भी अच्छे से काम करता है, बट अगर आपकी अंडर आइज बहुत क्रीज करती है देन यू आर गोइंग टू लव दिस, बिकॉज ये लाइंस के अंदर जाकर सेटल होकर सेट नहीं हो जाता है। कोई फुल कवरेज कंसीलर क्या होता है, एक बार लाइन में वो जाके सेट हो जाता है ना, फिर वो हिलते ही नहीं है और फिर वहीं पे और भी क्रीसिंग होने लगती है। मेकअप करने के बाद, पाउडर लगाने के बाद तो और भी लाइंस एनहांस होती है। सो आपको वो अवॉइड करना हो तो you're gonna use something that is hydrating. Okay, so I'm going to use Huda Beauty one today, and I always have two different shades. Now I'll show you why. One that is brightening, थोड़ा सा brightening है, okay? So ये definitely मेरे foundation से थोड़ा सा light है. So this is good for like every day, and थोड़ा सा आपको natural makeup look करना हो. जब भी आपको थोड़ा सा glamorous eyes हो, आपको थोड़ा सा bright करना हो under eyes पे, उस दौरान you can use something like this that is white. Like it's not white, it's like you can see the difference is significantly light. Now आप डायरेक्टली इसको कभी इस्तेमाल नहीं करोगे, आप पहले इसको इस्तेमाल करोगे और बाद में you're gonna use the tiniest amount in the inner corner. Now the shade that I use is granola, और मैं बहुत ज़्यादा कंसीलर नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ उसको अच्छे से स्प्रेड आउट कर रही हूँ, and I'm going to let the concealer sit like this for a while, like literally 30 seconds तक उसको ऐसे ही रहने देना है before we go in with a blender. I think I'm gonna do it here and a little bit of concealer here. Now with the beauty blender I'm gonna start blending it out. Now अगर आप concealer को directly blend कर दोगे तो उसका coverage भी नहीं आएगा और crease भी करेगा. So when you let that concealer set for a little bit, बाद में आप blend करो तो उसका coverage भी रहेगा और creasing भी नहीं पड़ेगी. And if you do sandwich method of using a darker one and then using the lighter one, तो आपको grey under eyes तो बिल्कुल नहीं होने वाला. I'm gonna go ahead and blend this one out. Dark circles भाई कहाँ है? Look at this. And the finish of this concealer is really impeccable. Now under eye set करने के लिए आप directly loose powder इस्तेमाल नहीं करोगे, and especially you're not gonna use a white powder. Have some color in it. So the one that I use is a peachy shade from Huda Beauty. So इससे क्या होता है, थोड़ा सा कलर करेक्ट भी हो जाता है because it's a peachy tone. So dark circles बिल्कुल नहीं दिखेंगे, ना ही आपकी अंडर आइज ग्रे पड़ जाएगी. आप येलो पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हो, just opt not to use a white powder. Now before going in with a loose powder, हम इस्तेमाल करेंगे compact powder. I'm gonna use Charlotte Tilbury Airbrush powder. Even Maybelline Fit Me one works really well because वो बहुत lightweight है. Actually वो अच्छे से smooth out भी कर देता है. Taking it on a small brush. Now don't go in directly. Blend out those creases. यहीं पे गलती हो जाती है कि हम क्रीज को सेट कर देते हैं. So पहले उसको क्रीज को स्मूथ आउट करो and then go ahead and set that with the lightweight powder. I'm gonna do the same thing over here. Now for all over my face, I'm gonna use a powder that matches my skin tone, और ये Sephora का powder है. It's called Micro Smooth Powder. इसका भी आप lighter shade use कर सकते हो under your eyes. ये बड़ा lightweight है and it really smooths out the skin. Loose powder के लिए हमेशा आप इस्तेमाल करोगे powder puff, and you're gonna take it and you're gonna smooth it out on back of your hand. तो बहुत ज़्यादा powder आप directly नहीं लगा रहे हो, okay? Smooth out करो सारा powder को, tap off the extra. So बहुत ज़्यादा powder नहीं है. Now अगर आपकी skin combination to oily है then you can definitely bake, but अगर आपकी skin थोड़ी combination to dry side पे है then just tap off the extra. We're still gonna use a loose powder, but we're gonna do a packing method like this. Basically press it down immediately and dust off any extra powder immediately. Now इससे आपकी अंडर आइज ड्राई भी नहीं लगेगी, but अगर आपकी skin oily है then you're going to take a good amount of powder, just smooth it out a little bit, but keep a lot of powder, and now you're going to bake. Basically आप उसको थोड़ी देर के लिए उसको यहीं पे रहने दोगे, and this is what's gonna make your under eyes not crease. आपका मेकअप भी जल्दी मेल्ट नहीं होगा. You can do the same thing on the nose because कई बार यहीं से मेकअप निकल जाता है, and on the center of your face. After 3 to 4 minutes, just take it off. We are at the last step, and this is where people make mistakes, especially when it comes to setting spray. Picking the wrong setting spray for their skin type. अगर आपकी skin dry है and if you use one size sweat-proof, waterproof makeup like makeup setter, your skin is gonna look so dry and matte because this is supposed to be mattifying. So if you do want to use something that will make your makeup last all day, you need to first use something that is hydrating. So you can use MAC Fix Plus first, and then after a while use a one size one, so your skin doesn't dry up. Especially after powders, क्या होता है ना कि आपकी अंडर आइज थोड़ी सी ड्राई लगने लगती है. After applying powder all over the face, you feel that it looks more dry, and if you use them together, your skin is going to look so flawless and your makeup is going to last all day. Now I do have a setting spray too that is completely alcohol free. This one is from Benefit. This one is also really nice, but I wanted to show you guys something that works for all skin types. So if you have oily skin, you're going to use one size. If your skin is combination to drier side, you're going to first use Fix Plus. I always spray first out, and this is gonna take away all my powders and dryness, and I spray a lot because I really want everything to melt in with each other. And now just let it get dry. If you have a fan, I have a huge fan here, so I'm just gonna turn that on.
I'm gonna come a little closer so you guys can see how all the powders have melted in with each other. No dryness, no creasing, nothing. So try using fixing spray, and now as our last step, we're going to use one side spray. When it comes to this setting spray, you're not gonna use a lot, just 1, 2, 3. Now compare the both sides. Dark concealer की color corrector, both side covered up the dark circles completely, so I totally approve both technique. Try both and see which one works best for you, and I hope this video was helpful and you learned something new. Now make sure to comment down below whatever topic you're struggling with, and I will make a video for you, and I'll see you guys on Thursday. Bye.